Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हम्मा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान डम्बुला में खेले गए 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज के पहले मैच में मेज़बान श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 45 रन से शिकस्त दी। जी हाँ, इस मैच का फैसला डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत हुआ। पहले ये मैच 49 ओवर तक महदूद किया गया, लेकिन न्यूजीलैंड की इनिंग का आगाज़ हुआ तो फिर बारिश हो गई और दोबारा इनको रिवाइज टारगेट दिया गया 27 ओवर में 221 रन का। श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग की और 49.2 ओवर में उन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बनाए थे, जब बारिश के बायस उनकी इनिंग को महदूद कर दिया गया और फिर न्यूजीलैंड की टीम को रिवाइज टारगेट 27 ओवर में 221 रन का मिला। और लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 27 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बना सकी और इस तरह इन्हें डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत 45 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में श्रीलंका के कैप्टन चरित असालंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनकी टीम 49.2 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बनाए। इनिंग का आगाज होता है तो ओपनर पथुन निशानका जो है, जब इनकी टीम का टोटल 17 पे पहुंचता है तो तीसरे ओवर की चौथी बॉल पे 12 रन बनाने के बाद आउट होते हैं। 10 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल और 120 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 12 रन बनाए। He was caught by Smith off the bowling of Duffy। लेकिन दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 206 रन की पार्टनरशिप होती है बिटवीन कुशाल मेंडिस एंड अविष्का फर्नांडो और ये पार्टनरशिप इनकी टीम का टोटल लेकर जाती है 223 के स्कोर पे। 39वें ओवर की दूसरी बॉल पे अविष्का फर्नांडो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज सेंचुरी वो आउट होते हैं एग्जैक्टली 100 के स्कोर पे। 115 गेंदों पे 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 87 के स्ट्राइक रेट के साथ he scored 100 runs। He was caught by Young off the bowling of इश्क सोदी। और फिर तीसरी विकेट जो है वो 238 के स्कोर पे सदीरा समरा विक्रमा 40 ओवर में आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग जस्ट 5 runs of 4 balls। He was caught by इश्क सोदी off the bowling of Bracewell। And the fourth to go was Kusal Mendis, a brilliant 143 of 128 ball with the help of 17 fours and 2 sixes with a strike rate of 112. He made 143 runs. He was caught by Nicholas off the bowling of Duffy. And fifth to go was the Sri Lankan captain Charith Asalanka in the 50th over after scoring 40 of 28 balls with the help of 3 fours and 2 sixes. And his strike rate was 143. Janit Layange remained unbeaten with 12 of 13 ball with the help of 2 fours. Sri Lankan batsmen hit 6 sixes and 34 fours and 6 sixes, and they managed to score 324 for the loss of 5 wickets. New Zealand bowlers were very expensive. Jacob Duffy, 8.2 overs, 41 runs and 3 wickets. His economy was 4.92. Nathan Smith, 8 over, 1 maiden, 66 runs and no wicket with economy of 8.25. Mitchell Santner, 10 overs, 53 runs and no wicket with economy of 5.30. Michael Bracewell, 9 overs, 73 run and 1 wicket with economy of 8.11. While Ishq Sodhi in his quota of 10 overs gave away 62 runs and captured 1 wicket. And Glenn Phillips also bowled 4 overs and he gave 23 runs without taking a wicket. In reply, because of the rain, New Zealand target was revised. They have to score 221 runs from 27 overs. But after getting a decent start, they crumbled in the middle and lost the match by a significant margin. They lost their first wicket in the 14th over. Opener Tim Robinson, after scoring 35 of 36 balls with the help of 4 fours and with a strike rate of 97, and he was stumped by wicketkeeper Mendis off the bowling of Maheesh Theekshana. Second to go was Will Young, adding just 1 run in the total, and Will Young, the other opener, was out after scoring 48 of 46 balls with the help of 8 fours and with a strike rate of 104. Very narrowly misses his half century with a 2 runs margin, and he was also clean bowled by Maheesh Theekshana. Third to go was Henry Nicholls in the 15th over, and New Zealand were 95. Henry Nicholls could only score 6 of 6 balls with the help of just 1 4. He was bowled by Charith Asalanka, the Sri Lankan captain. Fourth to go was Mark Chapman in the 17th over. New Zealand were 100 and they lost their 4th wicket, and Mark Chapman
made 2 runs of 5 balls. He was also caught by Maheesh Theekshana of the bowling of Charith Asalanka. New Zealand lost their 5th wicket at 110 and Glenn Phillips was the 5th to go. He scored 9 of 9 balls with the help of 1 4 and he was caught by Asalanka of the bowling of Vendersay. 6 to go was Mitchell Hay at 134 in the 22nd over and he scored 10 runs of 9 balls hitting just 1 6. He was caught by Avishka Fernando of the bowling of Madhushanka. 7 to go was Mitchell Satner, the New Zealand captain, at 156 in the 25th over after scoring just 9 runs and he was run out by Maheesh Theekshana. 8 to go was Nathan Smith in the 27th over. New Zealand were 171 and Nathan Smith made 9 of 8 balls and he was bowled by Madhushanka. And the 9th batsman was Ish Sodhi and he lost his wicket in the 27th over and New Zealand were 171. Back-to-back 2 wickets, 8 for 171 and 9 for 171 and they managed to score 175 for the loss of 9 wicket in their stipulated 27 overs and losing the match by 45 runs. Sri Lankan bowlers bowled brilliantly. They restricted New Zealand to 175 and Avishka Fernando 5 overs for 26 runs and no wicket. Dilshan Madhushanka 4 overs 39 runs and 3 wicket. Maheesh Theekshana 6 overs 32 runs and 2 wicket. Janit Leange 1 over 4 runs and no wicket. Jeffrey Vendersay 6 overs 40 runs and 1 wicket. Kamindu Mendes 2 overs 15 runs and no wicket. And the captain Charith Asalanka 3 overs 15 runs and 2 wicket. दोनों इनिंग की पेस देखी जाए तो श्रीलंका ने पहले 10 ओवर में 57 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवर बल्कि उनके 10 ओवर कम हो गए थे, पावर प्ले के 6 ओवर थे उनके और उन्होंने पहले 6 ओवर में 39 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। श्रीलंका ने अपने पहले 50 रन 7.2 ओवर में और न्यूजीलैंड ने पहले 50 रन 7.3 ओवर में मुकम्मल किए। तो नेक टू नेक बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं दोनों टीमें। और लेकिन अगर ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 40 मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग श्रीलंका की देखी जाए तो दे स्कोर्ड 181 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन दिस मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग और दे रीच देयर 100 रन इन 19th over and they're 150 in the 26th and they're 200 runs in the 35th over. They also reached the 250 in the 42nd and they reached the 300 runs milestone in the 47th over. And in comparison, New Zealand scored 39 in their first power play of 6 overs and they reached 50 runs in 7.3 overs, the 117th over and the 150 in the 24th over. Kusal Mendis of Sri Lanka, who scored a brilliant 143 of 128 balls, hitting 17 fours and 2 sixes, was declared man of the match. Sri Lanka now lead the 3-match series 1-0. And on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.